Okay, so this is the condition that we wrote. If, so everyone is comfortable with, it's very important, because this if condition, nested if condition are super important for the our entire course. If our foundation is weak, it will be really challenging for the preceding topics. uh, so we are all good with this if condition. Yes. Okay, all right, I'll confirm. I'll take this as yes. So now let's say the scenario is कंज्यूमर, ये जो टारगेट है ये कंज्यूमर के लिए है एंड कॉर्पोरेट के लिए. So we have two segments. Okay, this is consumer and corporate. Now the target, the target is different for different segment. Okay, now let's see. लैपटॉप थोड़ा ये हो रहा है. Let's say ये है 3 lakh. Okay, this is between 3 lakh and let's say greater than 3 lakh, and let's say 4 lakh 50. Okay, and greater than 4 lakh 50,000. Okay, so now the scenario is like we have a different target for different segment. Okay, this formula will not work because it is just calculating based on this scenario. If मैंने ये ड्रैग कर दिया तो यहाँ पे सब गुड बता रहा है बिकॉज कंज्यूमर का, कॉर्पोरेट का, like it's not meeting the threshold. Okay, now let's see how to get this. There. Yeah. Okay. Okay, now let me write a formula. If, okay, now we have two segments. Okay, we need to write an and condition. It will be an and. This is equal to consumer and sales is less than 2 lakh. I close my and again if start हो जाता है then poor है ना. Okay, poor. अभी else में we need to write a second condition और फिर से if आएगा and. So this will be is equal to consumer and sales is greater than 2, and इसमें तीन एंड कंडीशन है and less than 3 lakh 50. Okay, this is then average. अभी जो greater than 3 lakh 50 हम लोग else में नहीं डाल सकते because we have lot of more if conditions that we need to uh, take into consideration because we have not even started for the corporate segment yet. Yeah, so my here मेरा again if and this is equal to consumer and sales is greater than or equal to 3 lakh 50, then क्या है एक्सीलेंट ना क्या था. गुड. इधर तो मैंने क्या कर दिया. The consumer spelling at the last before the good. नहीं नहीं मैंने कुछ तो ये एंड अच्छा यहाँ पे हम लोग ने ये इन्वर्टेड ये नहीं डाला है.
Okay, so we need, so now it is good. Okay, so हम लोग का कंज्यूमर का मीट हो गया अभी. Okay, now if we drag, it will give me कंज्यूमर का, बाकी सब फॉल्स देगा क्योंकि इट इज नॉट. ओके, एनी क्वेश्चंस हियर? अभी तक हम लोग का फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, बट everyone are able to understand why we have to write and condition. With this was very simple. इसमें हम लोग को and का जरूरत नहीं था क्योंकि there was no segment into consideration. But इसमें कैसा है कि we have a two different segment, so we need to specify कौन सा segment के लिए हम लोग लिख रहे हैं. Clear? Yes, हाँ. yes, sir. Now yeah, we will again open this. फिर से हम लोग if start करेंगे, and now this is equal to corporate. Corporate and sales is equal to क्या है, लेस देन 3 लाख. देन अगर आपको समझ गया ना नेस्टेड इफ कंडीशन, देन इट्स वेरी इजी. नो मैटर हाउ मेनी कंडीशंस यू हैव, so I have written so many big if conditions. So basically once you understand the concept now, then no matter how complex the scenario is, you can easily write. So actually, we understand, but we need practice Yeah, on. practice definitely. Hence, Actually, yeah, this entire week you get entire week to practice. Okay, after this yes, yes, session I'll share the video, I'll share the training material, and yes, you need to utilize. I'm not saying yes, just practice 5 hours a day. Even if you practice 2 hours the entire week, that should be enough. Two yes, hours or 3 hours, if you can spend more time, that's good. But I think 2 hour dedicated effort of 2 hours should be enough. yes, sir. Yeah. Else if, and अभी ये end में three conditions आएगा, which will be if my segment is corporate greater than 3 lakh, and क्या है 4 lakh 50 है ना, and sales is less than equal to 4 lakh 50,000, and क्लोज करेंगे. if स्टार्ट होता है and it's average. Okay, now last condition. Now we are just left with last condition. Okay, we don't have to specify everything directly, else में आप डाल सकते हो. Good. तो automatically it will consider कि अगर corporate है और greater than 4 lakh 50,000, it will be good because बाकी सब condition उन्होंने specify किया है. अगर ये बाकी सब condition नहीं है तो finally it will look for the last condition. Okay, so now if we see, it is taking everything. Understood? So basically, Piyush, in this case, just because we're at segment, we have to use if and then because Yeah, the criteria is same, but then we have to do it two different segments. right, because we need to specify अगर consumer रहेगा तो क्या है. अगर like if the segment is consumer and sales is less than 2000, then poor, because we cannot have because corporate के लिए we have a different targets Hmm. ना. हाँ, Hmm. so these are the complex, and these are usually आपका जो भी if condition जिधर भी use करना है ऐसा ही रहेगा scenario. I mean Okay. only the logic like ये business, how do you say, this will be different. either target रहेगा या फिर कुछ और रहेगा, but if you understand this formula ना, Hmm. no matter what, how many complex scenario you have, you will be able to write it. खाली आपको या कभी if close करना है ये सब समझना चाहिए. So practice it. Practice is very important. you Yeah. know at least 1 hour of practice in a week is very important. Hence we call this as an 2 months session, not just 6 7 sessions training program. You have to basically practice it. uh, Once you practice it and it gets registered, it's super easy then. Okay. Because initially, I think on the nested if what the initial formulas I found myself a bit struggling on the syntax, but then Yeah. slowly got through it. Then थोड़ा समझा, but I वही है थोड़ा time spend करना पड़ता है हाँ. because on the syntax you have to understand what needs Right. to close and what needs to open. हाँ. So if के अंदर तीन रहता है. एक तो आपका कंडीशन क्या है, कंडीशन अगर हाँ, ट्रू है तो क्या डालना है, कंडीशन अगर फॉल्स है तो क्या डालना है. correct. हाँ, सो आई थिंक यू थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो हो जाता है. ओके, ऑल राइट. सो विल we'll quickly do the conditional formatting. Simple. अगर इक्वल टू गुड है तो मेरे को ग्रीन चाहिए.
अगर इक्वल टू एवरेज है तो मेरे को येलो चाहिए, इक्वल टू पुअर है तो रेड. Okay. Okay. All right. So now, yeah. So this is super important, as I said, for all our आगे का topic. So we will get into more. MIS reporting will be super complex. We'll be taking real industry examples, and we will basically see how to brainstorm for the KPIs, how to identify the KPIs, all those things. उसमें ये सब formulas is going to be super helpful. And by the time we reach that stage, I would expect everyone to be completely well versed with nested if. रात को 3 बजे भी कोई उठा के पूछे तो आपको आना चाहिए nested if. Okay. And then some ifs, count ifs, that I'll keep it for the next session, because I think today we are going to learn dashboard techniques. For that, we look up and if condition is sufficient, and I'm going to cover get pivot ka formulas, which is super easy and a really dynamic way to uh, create dashboards. So we'll go an easy way. So those things can be done through some ifs also, but I'll show and get pivot. Get pivot ज़्यादा easy है और easily समझ में आ जाता है. But in next we'll start with some if and some ifs, and then we'll slowly we'll start with the workforce reporting, quality reporting, KPI reporting, and then finally incentive. Incentive का जो है that we are going to cover is exactly what is being done in the market and in industry. So insurance industry में it has a super value, मतलब those kind of skill set get paid around 9-10 lakhs easily. तो incentive का हम लोग देखेंगे. So consider this, course is very important, if you are looking for a job, if you are looking for upskill, you know uh, consider this as a very important course, I would suggest. All right, now let's understand the data first. Okay, अभी scenario ऐसा है कि now what we are going to learn is how to create a dashboard. Okay, so uh, as a reporting specialist, my first thing is I need to understand the data. Okay, let's say this is the requirement given. मेरे पास सिनेरियो आया है. आई हैव बीन गिवन ए रिक्वायरमेंट टू क्रिएट अ डैशबोर्ड. सो दिस इज द डेटा. सो फर्स्ट डेटा को अंडरस्टैंड करना है कि डेटा बेसिकली आई सी प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर आईडी, देन कस्टमर आईडी, सेगमेंट. these are the dimensions, state, and we have category. So with this I can understand that it's a like sales data is है, इसमें orders है, then इसमें ship mode and all those things है. So I get a brief understanding क्या data है करके. Okay, and what are the important dimensions we have. uh, so this all the fields that we cannot calculate are called dimensions. और जो भी फील्ड जो रहता है जैसे कि सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट और ये सब जो भी जिसको मेजर कर सकते हैं, दोस आर कॉल्ड मेजर्स इन द रिपोर्टिंग वर्ल्ड. ओके, नाउ वी गॉट अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा. ओके, इसमें ऑर्डर आईडी है, देन ये है. ओके, तो ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड थिंग विल बी. ओके, मेरे को आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम बिजनेस कि व्हाट आर द. या, okay, so I want to understand from the business what are the business question that they are trying to answer. Okay, what are the visibility, that what are the insights they want to get from the dashboard. Okay, so very first thing मेरा second step रहेगा कि I set up a meeting with business, I understand what is their requirement. Okay, so I'll probe them. So first thing they want to see segments wise, मेरा segment wise sales का distribution कैसा है. Okay, so second thing, how are my region performing for each segment, how are my regions. Okay, what are my top 10 categories contributing to the sales. uh, top 10 categories, और हम लोग ले सकते हैं कि cities. Okay, top 10 cities ले सकते हैं. Okay, so based on the question we need to basically go back to data and understand if we have all the dimensions and measures available in the data. नहीं है तो we need to work on the data, get the proper data. So this is how the interaction happens at a very beginning level. You get proper understanding of the data, you ask right questions to the business. Based on the questions that we need to answer, we need to again look back the data to understand if everything is available. If not, we have a discussion with business to discuss what is feasible, what is not feasible.
what can be done at the later stage. So this kind of discussion happens in the beginning. Okay. So and we'll also see monthly sales trend for each region. Okay. So now हाँ, अभी मैं डेटा में जाता हूँ. यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन है इट इज मंथली सेल्स. नाउ आई सी देयर इज नो मंथ फील्ड. ओके, इसमें मंथ का फील्ड है नहीं. तो मैं क्या करूँगा, आई विल आस्क, I'll go back to the client and I'll ask that there's no month field. What do you want to consider? So they will say either consider month from order date or ship date. Let's say they finalize on order date. Okay, we need to create a month field from it. Let's see how to do that. Okay, मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे डाल देता हूँ मैं. ठीक है, लास्ट यहाँ पे मैं कॉलम एंटर करके I'll put month. I'll use a text formula equal to text formula. So using order date I am creating month, text D2, and the format that we want is like MMM. Okay, so now it is giving me, क्यों नहीं हो रहा है यार ये. Okay, so now it is giving me month. I'll drag it नीचे तक. Okay, so we got the month now. Okay, this is formulated. This is the, suppose if you do not have the month data, if it is there already, it's good. If not, this is the way to create month ka field. Use this simple formula text, link it to the agreed column, and then this is the format. If you use 3 mm, then it's give the abbreviation. If you use 4 mm, then it will give the pura month. Okay, November ऐसा ही है. So we'll keep it 3 for now. Understood? Simple thing. Okay. So now we understood that we have everything that we want. Okay, इसके लिए सेगमेंट का है हम लोग के पास, सेल्स है, रीजन है, सिटीज है. सिटीज है क्या देखने दो. हाँ, we have city. Okay, all right. So now the next step will be to start developing the dashboard. Okay, now let's see. यहीं पे मैं डालता हूँ. I'll rename as a dashboard. There is already dashboard का है. अच्छा, मैं डॉट डाल देता हूँ. Okay, this is my, let's say, requirements. Okay, and और एक मैं डालता हूँ for working. So ये मेरा raw data है. This is my ये I'll put it first. Okay, नहीं ठीक है, it's okay. हाँ नहीं, requirement को I'll put it here. This is my raw data. This is my working base जहाँ पे मैं सारा working करूँगा, and this is my dashboard. Okay, so let's see first how to solve the first requirement. Okay, sales distribution चाहिए, तो I'll go for a simple pie chart. Okay, I just want a sales distribution. Now working में let's create a pivot. Okay. From table range, select the data, raw data. Okay, इसमें मेरे को चाहिए segment, क्या है यार, हाइड segment and sales. Okay, a very simple pivot that we have created. Okay, so this is what we want to. One way you can directly create a pivot and give it to your client, but that is not the, I mean, they will get all the informations, but still it's not a, you're not giving in a dashboard format. You are just, passing the information in a tabular format. That is also feasible. I mean, but yeah, ideally it's a good way to create a proper dashboard, attractive dashboard, so that people like client get impressed. Then we get more work. So I'll just create this, और मेरा डैशबोर्ड में जाऊंगा. यहाँ पे राइट साइड में I'll do all the डैशबोर्ड का वर्किंग. Okay, I'll do page special. I'll just
values. This is my segment, so I'll just create a small pivot chart. Okay, अच्छा total नहीं चाहिए, I just need these three. Go to insert, go to chart, let's create a 3D one. Okay, इसको कट पेस्ट करके यहाँ पे लेकर आओ. Say segment wise sales percentage. Okay, यहाँ पे I want labels, so I'll do right click, add data labels, add data, but मेरे को percentage चाहिए. Okay, I don't want the absolute value. I फिर से format data label में I'll go and I'll select percentage. Okay, now there is a lot of other ways to format to make it, to beautify things. किधर गया, chart design में जाएंगे. So let's pick up some very good ये. Okay, इसका मैं grid lines निकाल देता हूँ. Okay, so now we have created a very simple. Okay, यहाँ पे थोड़ा नीचे ऊपर में will keep it for heading. हाँ, okay, so now there are a lot of other ways to format things, but I think you can play around. Okay, so we have answered our first question. Okay, what is my, ये हम लोग ने आंसर कर दिया, सेगमेंट वाइज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज क्या है. ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट. हाउ आर रीजन्स परफॉर्मिंग फॉर ईच सेगमेंट. ओके, नाउ हर एक सेगमेंट का देखना है उसको कैसा रीजन परफॉर्म कर रहा है. लेट्स क्रिएट ए वर्किंग पिवट फॉर इट. फ्रॉम टेबल रेंज, इसमें क्या क्या चाहिए हम लोग को, सेगमेंट चाहिए. ओके, रीजन भी चाहिए. ओके, और सेल्स चाहिए. ओके, दैट्स इट, यही हम लोग को चाहिए. एंड देन यू कैन डू लिटिल बिट ऑफ फॉर्मेटिंग. So instead of ये मेरे को classic करना है, so that I get proper columns and everything. Okay, this is what we want. But in dashboard what we want a drop down for segment. जब मैं drop down select करूँ, it should give me the bar chart for region wise sales. Okay, understood the requirement. This is what we want to do. We'll have a drop down for my segment, and when I select a value in my drop down, it should show me the uh, region wise sales in a bar chart. Okay, so drop down for segment and bar chart for region wise sales. All right, let's see how to do that. Now this is complex. Okay, thoda just be very attentive. Okay, so working में, so these are my three segments. We want this in the drop down. Okay, मैं dashboard में जाता हूँ. मैं थोड़ा I'll do some working here. हाँ, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1 2 3. Now for drop down, go to developer, go to insert. ये देखो कॉम्बो बॉक्स जो है ना, दिस आई विल टेक, और यहाँ पे आई विल ड्रॉ ए स्मॉल ड्रॉप डाउन. ओके, नाउ इसके अंदर वैल्यू कैसा डालना है, वेरी सिंपल. गो राइट क्लिक करो, इनपुट रेंज,
आप ये 3 इसमें ऐड कर दो. हाँ. And the next thing is cell link. So remember we discussed about cell link when we learned scroll chart in our last session. Okay, so cell link is very common for all the format form controls. Okay, cell link क्या रहता है? It basically gives the position of our selection. So अभी ये we need to assign, let's say, और let's say यहाँ पे करते हैं, कोई भी एक सेल दे सकते हैं हम लोग. Let's say here. Okay, AD4 I have assigned as my cell link. Okay, और इसको when I'll just color it so that, हाँ. So now क्या होगा? अभी ड्रॉप डाउन में you will see that there are values. Okay, when you see we have a value because मैंने input range में डाला है वहाँ पे. So when I select consumer, you will see यहाँ पे 1 आ जाता है. Okay, uh, when I select let's say home office, now that particular cell will have value 3. समझा? क्लियर है यहाँ तक? एनीवन डज एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन यहाँ पे? So this is Yes, basically, sir. yeah, ये form control का cell link है which automatically Sorry. gets updated based on the value that you select on your drop down. Okay, this is my input range, which are my values, and this is my cell link. Whatever position you will select will apply here. It will give the number. Hmm. Okay, so when I select corporate, now it should be 2 because I'm selecting the second position. Clear? Hmm. Yes. Okay, So Piyush, the cell link is basically at the back end for the workings, right? That's right, that's right. what we are at the back Yeah. end. Yeah, Yes. Yes. back end for the working. So now what we need is like we need value. ये 1 2 3 दे रहा है ना, तो हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए. वन में क्या वैल्यू है, वन में कंज्यूमर है, 2 कर रहा तो क्या वैल्यू आ रहा है. So I'll write a simple VLOOKUP formula here. VLOOKUP, this is my lookup value, comma, this is my छोटा सा table array. I'll freeze it, comma 2, comma 0. ये फॉर्मूला समझा सबको? सिंपल VLOOKUP फॉर्मूला. ओके, दिस इज माय यूनिक Hmm. फील्ड. अभी ये जो भी मैं ऊपर जो भी आ रहा है उसका मेरे को नीचे वैल्यू आ रहा है. 3 कर रहा हूँ तो होम ऑफिस आ रहा है, 1 कर रहा तो आ रहा है, कैसा आ रहा है ये? एवरीवन इज क्लियर? ये कैसा किया हम लोग ने? Yeah. सिंपल VLOOKUP फॉर्मूला, राइट? ओके, नाउ व्हाट वी वांट इज, हाँ, अभी देर आर कितना रीजन्स है? लेट्स गो टू द pivot. सो वी हैव दिस 4 रीजन्स. ओके, अभी ये Hmm. 4 रीजन मैं कॉपी कर लेता हूँ डैशबोर्ड पे. ओके, अभी, हाँ, व्हाट वी वांट इज ये रीजन, दिस इज रीजन एंड दिस इज सेल्स. मेरे को चाहिए कि ये रीजन का सेल्स यहाँ पे आए, बट इट शुड बी डायनेमिक. इट शुड बी बेस्ड ऑन द सिलेक्शन दैट वी डू, ड्रॉप डाउन सिलेक्शन. नाउ जस्ट ऑब्जर्व केयरफुली, वी विल राइट अ गेट पिवट फॉर्मूला. ओके, इक्वल टू, गेट पिवट फॉर्मूला लिखना नहीं होता है, जस्ट पिवट को लिंक करते हो, इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ गेट पिवट फॉर्मूला. सी ऑन द टॉप here, when I'm linking it Hmm. to a particular cell, it is automatically creating a get pivot formula. Now Yes. that's it. Okay, but now this is creating a static formula. ये particular मैंने जो link किया है वो है consumer और east. Okay, this is a static formula, it is not changing. So मैं अगर मेरा ये change कर रहा हूँ तो वो change नहीं हो रहा है. ठीक है, now to make it dynamic मेरे को इसको थोड़ा इसमें चेंजेस करना पड़ेगा. सो करेंटली इट इज कंज्यूमर सेगमेंट, बट हम लोग का कंज्यूमर इज ड्रॉप डाउन से आ रहा है, और ड्रॉप डाउन का जो Hmm. चेंज आ रहा है वो ये वैल्यू है. सो आई विल, ये कंज्यूमर को यहाँ से मैं निकाल के आई विल लिंक इट विथ दिस पर्टिकुलर सेल विच इज डायनेमिक इन नेचर. ओके, और रीजन को आई विल, इससे मैं ये कर दूंगा. हाँ, नाउ समवन इज ट्राइंग टू ज्वाइन. इतना लेट ज्वाइन करेंगे तो कैसा चलेगा यार. Okay, so now see what we did was, initially when we link it with the pivot, it creates a static get pivot formula. But to make it dynamic, what we have done is we have linked it with the dynamic cell. हम लोग का dynamic cell क्या है? ये है AD4, which is changing based on my drop down selection. Okay, Yes, sir. now I will create a bar chart from this. अरे ये मेरा
चले, इसको मैं लेके आता हूँ इधर, सेंड टू बैक, तो हम लोग का ड्रॉप डाउन इधर आ जाए, ड्रॉप डाउन को कैन स्मॉल, और इसको आई region wise, we'll name it as region wise sales. Okay, and then we can also beautify this using the similar format. Okay, and then we can also add a data label. Okay, so now see, when I to consumer, these charts are changing. Okay, ये कैसे हो रहा है? Simple. When we are when I'm selecting any value, it is getting applied here. ओके, वी लुकअप से, और बाद में यहाँ पे मैंने गेट pivot से उसको लिंक किया है, तो जो भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इट इज ब्रिंगिंग दैट वैल्यू. ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे लाइक मैं 1 करता हूँ तो 2 करता हूँ तो इट इज ब्रिंगिंग कॉर्पोरेट, 3 करता हूँ तो ये, एंड सिंपल वी लुकअप, नो, this can be done using VLOOKUP also, but get pivot is the simplest way to do it. Okay, understood everyone? Get, hence I'm covering get pivot, because get pivot से आप बहुत ही fast and attractive dashboards बना सकते हैं. Any questions here? Suppose to get a drop down, you just brought in the bar chart. You just हाँ, brought the form data ahead, right? हाँ, That is written डेवलपर in the से, bar chart. या हाँ. यहाँ से, ये you just create it, node बन जाता है, then add a value into it, you need to assign a value and cell link, that's it. वो तो बाद में you can just put it लेके जा सकते हो चार्ट पे. Okay. ओके, ठीक है, हम लोग ने बाद में, हम लोग ने, so we follow an agile method, it's not that we wait for entire dashboard to complete. We have an a weekly connect with our client, we show them the progress. Okay, so the scenario is like I went and I showed this to my client, because it was so attractive, client got very excited. Okay, wow, ये तो सही है, मतलब it's magic, it's like drop down हो रहा है and everything. But they also came up with a requirement कि I also want to see the profit here. Okay, so formatting label हम लोग निकाल देते हैं, it's not looking that good. Okay, now the requirement has changed. Okay, we got an additional requirement. Okay, how are my region performing in segment? By sales and profit. So this will happen lot of time, एक वन गो में होता नहीं है, like every time there will be multiple iteration, your discussion with stakeholder, requirements keeps changing, new requirements keeps adding, so this will happen. So now the scenario is we shared it with the client and then they asked that can we also see profit along with the sales. अब मेरे को क्या करना है, we basically need to do a smart way, we just cannot just create one more chart that will not making good use of the real estate that we have. Okay, what I will do instead, I will create two radio buttons here. Okay, एक sales के लिए और एक profit के लिए. Okay, let's see how to do that. Again go to developer, go to, एक मिनट, उसके पहले इसको थोड़ा 3D कर देते हैं, so it looks good. अभी let's go to, ये see here we have a radio button. Okay, so पहला radio button जो चाहिए हम लोग को, is it allowing to, ये करने देगा क्या ये पता नहीं, शी नहीं देगा यार. ठीक है, you are able to see now. Otherwise you remove this and, बब्बू मुझे क्लास चालू है, प्लीज प्लीज. हाँ पोगी ना, दीदी के चो, सॉरी.
बाबू वेट, बाबू प्लीज. किधर गया? किधर गया वो? हाँ, टेक्स्ट. लेट्स से एक और टेक्स्ट. Just remove. Let's say just give me 1 minute. I need to. No worries, please. Take your time. अरे इशिता, इशिता, लेके जा तो जरा इसको. हाँ, ठीक है. Will not spend much time in this formatting and all. Okay. We'll just add a text here. Sales, and then we need one more radio button for profit. Or we can change the design, make it little lighter. Okay, ठीक है. इसको भी फिर हम लोग कर देते हैं so that looks. इसमें वैसा है ही नहीं क्या? चलो ठीक है. This is okay. And profit. Okay. See, I've created this to make it 3D so that it looks better. So now, like what I want is, so currently this radio buttons are not doing anything. Okay, I've just put that into the dashboard. Unmute किया ना मैंने. हाँ. All right. Sales profit. Now let's see how to link it with this chart. Okay, this existing chart. So simple. I just brought these two radio buttons into my. Yeah. Now let's see the working. अब यहाँ पे हमारे पास सेल्स है लेकिन प्रॉफिट नहीं है. So we need to bring profit also. Okay. Now let's see how to do that. See, similar to our drop down, even radio button, we need to define cell link. Okay. To right click, format control. See, it is asking for cell link. So we can link it with say any cell. Let's say if I कोई भी एक ले लो मतलब. Let's say ये. Color it with. Yeah. Now good thing is about like no matter how many radio buttons you use, you have to assign only once. अब मैंने इसके लिए किया ऑटोमेटिकली. इसके लिए उसने वो ले लिया उसने. Like this is my one and this is my two. So when I click on this, you will see that particular cell length is 2 now. Okay. So you have to just assign your cell link only for one radio button. So irrespective of how many radio buttons you are using in your dashboard, it will automatically link all other radio buttons to that particular cell link. So now ये मेरा 1 है और ये 2 है. Okay. So now let's see how to do. यहाँ पे मेरे को I will have to write an if condition. Okay. Under if
this cell link is equal to 1, then जो हम लोग का get pivot है which is good, okay, which is currently bringing the sales, ये else else मेरे को profit चाहिए, else I will go to my working and link it with my profit. That's it. हो गया. Now again, this one is dynamic, this one is static, so we need to make it dynamic by linking it with the dynamic cell. मेरा segment है, ये वाला dynamic cell है, और region जो है मेरा ये है, इसको हम लोग को फ्रीज करना है. Okay, now if you see your chart has become dynamic. सेल्स कर रहा तो सेल्स दे रहा है, प्रॉफिट कर रहा तो प्रॉफिट दे रहा है. अंडरस्टूड? See, these are so simple things, all you need to know is if conditions. इसमें तो अभी तो खाली if condition and get pivot you saw, it's super easy. You just need to link it with the pivot, automatically get pivots gets generated. समझा कैसे किया ये? So now your chart is connected with drop down as well as radio button. Okay, चालू है ना? You are able to hear me, right? So radio button is only Yes. one Yes, selection. yes. Yeah, is it finding? Are you finding it complex? क्या? Actually, for the people who know only basics, हाँ, for them it's advanced. But okay, I mean, हाँ. नहीं, नहीं, we you need can to practice, practice and these things will, yes, yes, you yes, need to register all those things. See, yes. yeah, actually we are using some basic VLOOKUP and if condition only. That It's we just know, we are yeah. exploiting those, knowledge into bringing, look, build something very beautiful dashboard. You know. And Yes, this yes, training you will not find anywhere, I'm telling you. आप yes, yes. कितना भी YouTube देख लो, ये किधर नहीं मिलेगा आपको. So it's something that, I had to, like when I was working in eClerks, we used to create a lot of dynamic dashboards for our clients. That's where I learned these techniques, and then slowly I improvised it to get it more complex. So there is a lot we can do. You just with basic Excel skills, like Yes, if we look up sum ifs इतना आ गया तो आप बहुत कुछ कर सकते हो. yes, sir. Okay, so very first thing will be get comfortable with the basic formulas like if condition we look up. That will be our first focus. Second is ये dashboards कैसे बनाना है. Okay, Yes, sir. Yes, sir. हाँ. So this ये समझा कैसे ये लिंक हुआ. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just we need हाँ, a little more हम लोग ने if practice. कंडीशन यूज किया. if अगर Yeah. ये 1 है, so this is my cell link for my रेडियो बटन. मेरा सेल लिंक 2 हो रहा है, 2 है तो दैट इज मेरा प्रॉफिट सिलेक्टेड है. सेल लिंक 1 है तो मेरा सेल सिलेक्टेड है. अरे ये नीचे वाले नहीं हो रहे हैं. अच्छा, ड्रैग नहीं किया क्या मैंने? अच्छा, किधर तो प्रॉब्लम हुआ है. सी ये मैंने फ्रीज नहीं किया है. ओके, ये फ्रीज नहीं किया तो क्या हो गया था. सी मैं ये अगर फ्रीज नहीं करता हूँ तो देखो वो चेंज हो रहा है A5 और A ही है. बट हम लोग का जो ये है, दिस इज ओनली फ्रॉम दिस सेल ना, सो आई नीड टू फ्रीज इट. Okay, और वो change हो रहा होगा. हाँ, नाउ इट विल बी गुड. ओके, अंडरस्टूड सिद्धार्थ? अंडरस्टूड क्या? Suppose radio button is only one selection, right? So it automatically takes the other selection also. एक बार हाँ, select किया radio button, then it takes एक ही the को, हाँ, एक ही बार लिंक किया ऑटोमेटिकली वो सेल लिंक सबको अप्लाई हो जाता है. लाइक अभी मैं अगर इन केस इफ आई पुट वन मोर रेडियो बटन ना, लेट्स से एक और मैं लेता हूँ. हाँ, अभी मैं इसको क्लिक करूंगा तो वहाँ पे 3 आया रहेगा. 3 आया. अभी आप सोच रहे हो कि 3 आया तो फिर ये चार्ट स्टिल क्यों शोइंग? क्योंकि मैंने कंडीशन कैसा दिया देखो. मैंने दिया है इफ 1, इफ ये 1 है correct. एल्स में प्रॉफिट रहना चाहिए. सो 1 नहीं है, उसके अलावा कुछ भी वैल्यू है तो इट विल शो प्रॉफिट. इफ आई स्पेसिफिकली यहाँ पे बोलूँ 2 रहेगा तो ही प्रॉफिट, और अगर देन रहेगा तो ब्लैंक दिखाओ तो द चार्ट विल शो ब्लैंक. अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? Correct. So it's basically dynamic. या Yeah. ठीक है.
All right, now we'll move ahead. So again, I'll share the recording and basically, practice it. I think I should. I'm sure it is not very complicated. Once you practice it, it's just we are making good use of if conditions, get pivot, and all those things. So the only thing remains, Piyush, in a live scenario, only thing remains next month. Probably you just need to just update number. That's the refresh. Rest all is same, right? So Yeah, yeah. month on month, just refresh the numbers, and that should be it. Huh. Come on, numbers. Yeah, we can establish an like full automation. Just need to put the data and everything should get. So अभी ये pivot से connected है. You put the data, you refresh the pivot, Ah, automatically dashboard gets refreshed. correct. So it's just a one-time setup. Okay. हाँ. And this like ये वाला हम लोग ने static किया है, but then we can always do that. Like इसको मैं क्या करता हूँ? I'll just link it with the pivot. Okay. और इसको मेरे को इधर सेगमेंट को चेंज करना है. सॉरी सॉरी ये नहीं. ये जो पहला वाला चार्ट था हम लोग का, ये वाला पहला वाला चार्ट था, ये मैंने Yeah. यहाँ पे ये मैंने ये स्टैटिक रखा है, बट वी कैन मेक इट डायनामिक. ये यहाँ पे सेल्स को आई लिंक इट विथ. ओके, देन सेगमेंट को आई विल सो दैट टू दैट्स इट. अभी आपका डैशबोर्ड, आपका डेटा आप डालोगे नया, आप डैशबोर्ड रिफ्रेश करोगे तो ये नंबर भी रिफ्रेश हो जाएगा, बिकॉज नाउ इट इज कमिंग फ्रॉम द पीवर्ड, नॉट ए स्टैटिक डेटा. ठीक है. हाँ. ओके, नाउ लेट्स सी हम लोग का थर्ड सिनेरियो, विच आर माय top 10 cities contributing to. Okay, let's take this later on. Let's see for monthly sales trend for each region. Okay, अभी इसके लिए मेरे को क्या चाहिए? मंथ चाहिए, सेल्स चाहिए और रीजन चाहिए. ओके, लेट्स क्रिएट a pivot. So I'll just copy the pivot. पूरा नया नहीं बना रहा हूँ मैं. Segment we don't want, we want a month. Region चाहिए. अरे मंथ नहीं आया क्या इसमें? ओके, सो वी हैव क्रिएटेड अ वर्किंग पिवट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. मेरे को चाहिए था रीजन, चाहिए था मंथ, चाहिए था सेल्स, चाहिए था. ओके, नाउ लेट्स यहाँ पे आई वांट टू शो सेल्स का ट्रेंड. सो लेट्स टेक द मंथ. अगेन द रिक्वायरमेंट इज रीजन, हम लोग ड्रॉप डाउन में डालेंगे, विच इज ऑलरेडी विल हैव टू क्रिएट. ठीक है, वी वांट सेल्स. See, same thing we need to do for region. So we have this drop down for segment here. Okay, now for my, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग. Okay, हाँ, now we want a drop down for region. Okay, let's create a drop down. Go to developer, go to insert. Okay, नया drop down डालते हैं हमें. हाँ, अब मेरा region किधर है? यहाँ पे है.
You can utilize this also, or you can create new working. Let's create new. इसको नंबर दूंगा मैं 1 2 3. ये नंबर क्यों चाहिए? बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज वी लुकअप, ओके, टू गेट द डायनेमिक. यहाँ पे कैसा यूज किया था हमने वी लुकअप, वैसा इसके लिए रीजन के लिए भी वी नीड टू यूज. ओके, नाउ लेट्स assign values to the drop down. Go to format, input range ये है मेरा. सेल लिंक मैं देता हूँ, लेट्स से ये AS4. so इसको I'll just color code so that we keep a track of it. So now if you see, इसमें values आ गया, and then currently I've selected south, तो मेरा सेल लिंक में वैल्यू रहेगा 3. समझा? ये एवरीथिंग इज लाइक दिस इज क्लियर, राइट? सेल लिंक का कंसेप्ट. Yes, no? Yes, 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 sir. selling the Yes, concept sir. is clear, no? Now, because we want values and not just number will not work, क्योंकि get pivot हम लोग को करना है. I need value here. I need to write a simple VLOOKUP. Okay, VLOOKUP. This is my lookup value. I'll freeze it. This is my छोटा सा table array. Okay, comma 2, comma 0. Okay, now it is giving me value. Okay. अब मेरे को क्या करना है? अगेन सिंपल गेट पिवट. ओके, गेट पिवट इज द सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट अ डायनेमिक डैशबोर्ड. दिस कैन बी डन यूजिंग वी लुकअप, सम इफ और वो सब करके भी कर सकते हैं, बट इट गेट्स कॉम्प्लेक्स. It is important to learn that also, but we'll for now I think we'll use get pivot, because get pivot is super easy way to do that. We are going to learn sum if and sum if, so सब हम जब हम लोग KPI reporting करेंगे, at that time you will get to learn how to make use of VLOOKUP and sum if to create like KPI scorecard, workforce reporting and all. Okay. Now all I need to do is मेरा get pivot से link करना है, the pivot that we created, ये वाला. So it generates the get pivot. ये मेरा अभी currently it is creating a static get pivot जो मेरा central region और month के लिए है. Now we need to do the exactly same thing that we did for the other get pivot. ये मेरा region जो है dynamic है, तो मेरे को ये region central को निकाल के I need to link it with my cell link का dynamic cell. I'll freeze it. Month जो है कि this is Jan static है, इसको मेरे को I will link it with ये वाला, and that's it. Now if I just drag it, okay, understood. अभी आप देखोगे ये चेंज हो रहा है, वैल्यूज चेंज हो रहा है यहाँ पे. Okay, now since these are my dynamic, I'll just create a line chart out of it, and my line chart becomes dynamic. 3D nature ये लेते हैं. इसको पीछे लेते हैं तो हम लोग का ड्रॉप डाउन आगे आ जाएगा. We'll change the design. ये देखो कुछ अजीब ही लग रहा है तो. Okay, we don't want labels. Okay, now if you see it is changing. इसको कुछ है क्या अच्छा यार? ब्लू में कुछ है ही नहीं क्या? फॉर्मेट चार्ट एरिया, थोड़ा अलग करते हैं.
ठीक है, थोड़ा क्लोज है. Okay, so we have answered almost. So this is also done. Okay, now what is remaining is the last one, that is top 10 cities. Let's create a title first. क्या हुआ है ये? हाँ, अभी, हाँ, देर इज एन, अभी देखो आपको अभी दिख रहा है कि ये सब अनइवन है. ओके, सो यू सिलेक्ट दिस, यू सिलेक्ट अदर चार्ट, सिलेक्ट अदर, एंड देन देर इज एन ऑप्शन कॉल्ड, किधर गया अलाइनमेंट? हाँ, अलाइन, अलाइन बॉटम. तो ऑटोमेटिकली इट विल bring everyone in the proper alignment. थोड़ा ये लग रहा है. And this से अभी format shape, solid fill. I'll not focus more on the color. Let's name this as sales. Bring it in the middle. ये पिंक का तो लेडीज कलर लग रहा है यार. चलो ठीक है. It's important. I mean, it's a lot of value when you create a very beautiful dashboard. It basically gets appreciated, and is, uh, something is very important. That's okay. Now let's see how to solve the last requirement, which is which are my top 10 cities contributing to the sales. Again, we'll create a simple bar chart. Okay, what we need for this is my sales and the cities. Okay, देखो यही चाहिए. So let's create a pivot. I'll remove region, I'll remove month, I'll put city. Okay, और क्योंकि we need top 10, I think it's we can just sort this highest to lowest so that we get proper right click करके. Okay, so these are my 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, these are my top 10. This is what we want to show in the chart. Okay, now let's see. uh, let's okay, let's take this 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Okay, ये डैशबोर्ड में डाल देते हैं हम लोग. And then we get the data. Now because we are also thinking of the automation and not the static dashboard, we want this to be refreshed whenever we change the data. We'll link it with the get pivot. Okay, okay, यहाँ पे भी सिंपल गेट pivot बनाया मैंने. सिटी को मैं लिंक कर देता हूँ
with this. Okay, so now this also ensures the automation, because whenever we change the data, refresh the pivot, the value will change here because we have used a get pivot. Now all we need is simple chart, insert bar chart. Okay, okay, so here like this is giving me the uh, top 10 cities by sale. Okay, because we have applied a sorting here, and we are it's already sorted from highest to lowest. It's already showing me the top 10 cities here. Now again, we shared this with our client, and let's say create. Huh. Yeah, so they really liked it, everything, like it's meeting all the requirement. But again, they came up with one more change, that at a top view I want to see top 10 cities, but I do not want to lose visibility on other cities as well. Okay, now what they want is like top 10 to दिखना चाहिए पहले view पे, but also I want a feature wherein I can see the sales for other cities as well. Okay, so now smart way will be utilizing, making good use of the real estate that we have. What we will do is we will create one scroll bar. Okay, यहाँ पे we will create a scroll bar. किधर गया? अच्छा, this is scroll bar, and let me just create. hmm, ये नहीं है क्या? ऐसा कैसा दिख रहा है ये? ये अच्छी भी दिख रहा है यार, स्पिन बटन। हाँ, यही है। ओके, सो दिस इज माय स्क्रॉल बार, दिस इज लुकिंग वियर्ड, आई डोंट नो, आई थिंक मेरा एक्सेल का कुछ तो चेंज हुआ है। लेट्स सी, फॉर्मेट कंट्रोल, अच्छा 3D। ओके, ठीक है, लेट्स सी। So what I want is like when I scroll this, it should also give the chart should scroll, and it should give me the sales for other cities as well. Okay. Now, as we know that one thing is very common for all form control is cell link. Okay. Now I will do cell link, यहाँ पे करूँगा मैं। इसमें there is like you cannot put it anywhere. It should be above your numbering that you do. इसको मैं, okay. Now the way it is working is up.
जो भी स्क्रॉल कर रहे हो, इट इज चेंजिंग द नंबर। ओके, लाइक मैंने अभी करंटली इट इज एट 0 पोजिशन, तो आप देखोगे तो यहाँ पे इट विल बी 0। ठीक है, so it's like when you scroll it will increment the number, whatever increment that you, and then you can control the increment, like want to increment by 1, you can increment by 2, all those things can be done here, kitna maximum rakhna hai, kitna minimum, and everything. Okay, now let's do the numbering here. 1 2, what I will do, yeah, so यहाँ पे instead of static I will bring it using VLOOKUP। वर्किंग में यहाँ पे मेरे को I will create a unique field so that I can use it in my VLOOKUP। यहाँ पे I will write a VLOOKUP, this is my lookup value, this is my table array, I will just want cities, comma 2 comma 0। ओके, यहाँ तक समझा सबको मैंने क्या किया? जस्ट मैंने VLOOKUP करके cities लाया, ये क्यों लाया आई विल शो यू। नाउ इंस्टेड ऑफ मैनुअल नंबरिंग व्हाट आई विल डू, अभी समझो ये 0 पोजीशन पे है मेरा स्क्रॉल, आई विल डू 0 प्लस 1। ओके, एंड देन आई विल जस्ट ड्रैग द फॉर्मूला। सो ये क्या कर रहा है, ऊपर का वैल्यू से वो +1 कर रहा है, सो दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स 2, दिस बिकम्स 3, बिकॉज इट इज एडिंग फ्रॉम द टॉप। ओके, नाउ व्हाट आई हैव डन इज लाइक ये दिस इज हमारा डायनेमिक सेल। नाउ मैं अगर स्क्रॉल को 9 पोजीशन पे लेके जाता हूँ तो इट विल शो रिस्पेक्टिव सिटीज, ये नंबर के बेसिस पे आई एम गेटिंग सिटीज, और गेट पिवट के बेसिस पे आई एम गेटिंग सेल्स हियर। ओके, let's put this as a 0। Okay, now when we go to the chart, we have achieved what we want. Now when I scroll this, you see my cities are changing। It will appear कि ये पूरा scroll हो रहा है, but all it is doing, it is bringing the values using the uh, ये the get pivot and the VLOOKUP formula that we have applied। Understood, how we did the working for this? So basically हम लोग ने क्या किया, ये VLOOKUP से आ रहा है, so whatever value यहाँ पे आ रहा है वो VLOOKUP से cities लेकर आ रहा है, and get pivot से sales लेकर आ रहा है। Okay, this can be done using VLOOKUP also। Okay, but VLOOKUP, हाँ VLOOKUP से भी कर सकते हैं, instead of get pivot you can use VLOOKUP, या 2 के जगह पे 3 पोजीशन का सेल्स लेकर आने का। क्लियर, एनी क्वेश्चंस? Suppose if you just go on the yeah, if you just drag those, if I see the cities, so right now these are top 10 cities, right? As या per the या original setup. हाँ, वन लाइक अब अगर मेरा स्क्रॉल इज एट द 0 पोजीशन, आई एम सीइंग द टॉप 10, हाँ, एंड व्हेन आई स्क्रॉल आई at गेट, the तो हेडिंग चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को, लाइक जस्ट हाँ, टॉप सिटीज, या फिर वी कैन ऑल्सो लिंक इट बीच में ये सब करके, दैट दैट वी कैन डू, मतलब एक टेक्स्ट वे ये लेकर आओ एंड देन लिंक इट विद लेट्स डू दैट क्विकली इफ यू वांट, आई जस्ट शो दैट टेक्स्ट लेकर आओ एंड लिंक इट विथ योर यहाँ का लास्ट वैल्यू। ठीक है, हाँ, सो आई एम नॉट डूइंग द फॉर्मेटिंग, लाइक हियर इट विल गिव मी, समझा, वॉट एवर okay, टॉप 10, या so we can put it here, टॉप को लिख के बीच में डाल सकते हैं, but that is the formatting work, I'm not getting into that। Then lot of formatting you can do, you can just remove the color and everything, like no fill, uh, and then line, like no line, इसको कलर चेंज करके वाइट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, दैट्स ओके। okay. या
See, very easy. These are very easy things. We it may like appear that it's hard, but then all we used was get pivot, if condition, and we look up. That's it. With just uh, three these options. एक मिनट यार ना ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा यार एक मिनट insert I think 2D लेते थे ना now we have this हाँ यहाँ पे है देखो segment wise sales. So now it is looking consistent. Okay, so it's looking so beautiful. See, a lot of dynamic features are there. We have radio buttons, we have drop down, we have scroll bar, and it was super easy. Once you get comfortable with formulas, completely well versed with the formulas, you get a lot of ideas. To create dynamic dashboards out of it. Okay, any questions? No, sir. Yeah, I'll share this. Okay, I'll share this file with you all on email. I will also share the recording. Very first thing, if you are still not comfortable with if conditions and nested if, I would recommend just work hard on getting very comfortable with nested if and if conditions, and then also learn these dashboard techniques. Okay, so we are going to start getting into very complex topics from next year. So we'll start with complex formulas, then the KPI reporting, workforce reporting, and all those things. Okay. Yes, sir. Yes, yes, sure. All right. I think will end today's session here. You can just WhatsApp me if you have any questions. We'll definitely try to connect and discuss. All right. Thank you. Sure. Thank you very much. Thanks, Piyush. Thank you, sir. Thank Thank you you. so much. Yeah. Yeah. Thank Thanks, you. Piyush. Thank you. Bye. Bye.